Okay. I hope the screen is visible to you all. And today we are going to start a new unit, material characterization techniques. Material characterization techniques. So before proceeding, I would like to go through the syllabus. What we have to study here. Uh, First of all, introduction to material characterization. Okay, and then related material characterization techniques. ठीक है ना? And these are two: microscopy and spectroscopy. Microscopy and spectroscopy. Uh, in microscopy, mostly we are not going to deal in detail with your optical microscope, but we are going to do we are going to deal with the much more sophisticated uh, instruments related to electron microscopy. Okay, and then we have some instruments related to spectroscopy, and these are what energy dispersive X-ray, XRD, okay, and your XPS. ठीक, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे. NMR, EBR, oh sorry, EBST. ठीक है, so we will see how these things work and what is material characterization, ठीक है ना, and how these instruments help us in characterizing the material. ठीक है ना, material characterization में help कैसे करते हैं. ठीक है, so first of all, before proceeding, I would like to ask from your side, what do you understand by material characterization? What do you mean by this term, material characterization? का क्या मतलब है आपके लिए? आपको क्या समझ में आता है? Anyone? बताएं भाई. बताए. जागृति, विवेक. स्ट्रक्चर जी, सर, जैसे मटेरियल का स्ट्रक्चर कैरेक्टराइजेशन उसको स्ट्रक्चर की बेसिस पे डिफाइन कर सकते हैं. स्ट्रक्चर के बेसिस पे डिफाइन कर सकते हैं मटेरियल. सर उसके तो प्रॉपर्टीज के बेसिस पे. किस पे? यस सर. प्रॉपर्टीज सर. प्रॉपर्टीज के बेसिस पे. कैन यू गिव मी सर, सम एग्जांपल्स? हाँ, सर प्रॉपर्टीज लाइक उसकी स्ट्रेंथ कितनी है और मतलब ऐसे बहुत से सर, जैसे हम कोई टेस्ट अगर परफॉर्म करते हैं मटेरियल पे तो उसके जो भी पैरामीटर्स निकलते हैं तो हम वो बता सकते हैं. ओके. एनीवन एल्स? सर उसका बिहेवियर भी जैसे कोई टेम्परेचर पे कौन सा मटेरियल कैसे बिहेव करता है, या फिर इन्वायरमेंटल कंडीशन ज्यादा सेंसिटिव मटेरियल है ऐसा. ओके. यस, विवेक. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय? सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है. आपका नेटवर्क स्लो है भाई. तो मैं कह रहा हूँ कि मटेरियल कैरेक्टराइजेशन से आप व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मटेरियल कैरेक्टराइजेशन? सर प्रॉपर्टी चेक करेंगे इसके अंदर, और अगर इन टर्म्स ऑफ अगर माइक्रोस्कोप है तो हम देखेंगे कि उसका
फॉर एग्जांपल अगर अ, वो ट्रांसमिशन कैपेसिटी कितनी है, फिर कितने पिक्सल्स तो वो कैप्चर कर सकता है। नो 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 नो, ये तो आप इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, मटेरियल करेक्टराइजेशन की। मटेरियल्स तो उसके अंदर यही ना सर, प्रॉपर्टीज आ गई ना फिर। ओके। हेलो हाँ, हेलो। यस यस, सर। एक्चुअली फॉर अ सर मोमेंट आपकी वॉइस आई नहीं आ रही लॉस्ट है। द कनेक्शन। यस, इज इट ऑडिबल नाउ? यस सर। ओके, ठीक है। तो मटेरियल करेक्टराइजेशन में आप लोग जो प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, ठीक है, सो व्हाट सॉर्ट ऑफ प्रॉपर्टीज यू आर लुकिंग फॉर? ऑब्वियस सी बात है, हम प्रॉपर्टी के बेसिस पे ही क्लासिफाई करेंगे, ठीक है, एकदम बात सही है। बट आप सिलेबस देखें और ये बताएं कि जो आपने प्रॉपर्टीज बताई हैं उससे हम ये प्रॉपर्टीज मेजर कर पाएंगे? हाँ, इन इंस्ट्रूमेंट्स को इस्तेमाल करते हुए जो आप बता रहे हैं, स्ट्रेंथ वगैरह ये सब, उससे हम स्ट्रेंथ मेजर कर सकते हैं? हाँ, हाँ, कैन वी? सर स्ट्रेंथ तो हमें बाद में मेजर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है इसका स्ट्रक्चर देख पाएंगे विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, कि इसका स्ट्रक्चर दैट मीन्स बीसीसीए या फिर एफसीसीए, ये स्ट्रक्चर्स हम देख पाएंगे उसका। फिर उसका ग्रैनुलर स्ट्रक्चर देख पाएंगे हम इसका। तो उसके थ्रू हम जो है जैसे कि क्विंचिंग लिंचिंग वगैरह जो प्रोसेसेस है, सैम्पलिंग लिंचिंग जो हमने सेकंड ईयर में मेटालर्जी में देखा था, उसके लिंचिंग थ्रू नहीं, हम प्रॉपर्टीज लिंचिंग निकल सकते हैं। भाई, एक मिनट। हेलो, हेलो, एम आई ऑडिबल? यस सर। एक्चुअली इको बहुत ज्यादा हो रही थी इस वजह से। ठीक है, दैट्स गुड। सो यस, अब आप लोग थोड़ा सही जा रहे हैं, ठीक है ना, कि मटेरियल करेक्टराइजेशन से हमारा क्या मतलब है, ठीक है ना। सो करेक्टराइजेशन ऑफ मटेरियल से हम यहाँ पर यही समझ रहे हैं कि इट इज अ प्रोसेस बाय विच मटेरियल स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज आर प्रोब एंड मेजर्ड, ठीक है ना। सो डायरेक्टली हम प्रॉपर्टीज, ये प्रॉपर्टीज मेजर नहीं करते हैं, स्ट्रेंथ वगैरह या हार्डनेस, ये सब नहीं मेजर करते हैं। वी एक्चुअली मेजर दी सरफेस प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर ऑफ द मटेरियल, कॉम्पोजिशन ऑफ द मटेरियल, ठीक है ना, कि किन किन एलिमेंट से बना है। सपोज करिए कि आपको कोई शख्स ला करके, जैसे कोई भी एक पत्थर का टुकड़ा ला के दे दे या कोई भी एक मटेरियल ला के दे दे, ठीक है ना, एंड दे डोंट टेल यू कि व्हाट दिस इज, ठीक है ना, और एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग में लोगों को पता भी चलता है या कुछ बनाया उन्होंने, अब उनको चेक करना है कि व्हाट एक्चुअली दिस कंटेन्स, ठीक है ना, व्हाट एक्चुअली दिस थिंग कंटेन्स, व्हाट सॉर्ट ऑफ कंपोजिशन इज दिस एंड व्हाट बिहेवियर इट शोज, ठीक है ना। सो उन सब चीजों के लिए इसको हम कहते हैं कि उस मटेरियल की प्रॉपर्टीज आइडेंटिफाई करना, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द मटेरियल, व्हाट इज द सरफेस प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल, व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ दैट मटेरियल, इस चीज को मेजर करना, हम इसे मटेरियल कैरेक्टराइजेशन कहते हैं, मटेरियल कैरेक्टराइजेशन कहते हैं, ठीक है।
And related to this, there are some techniques and instruments with which जिसकी हेल्प से हम ये काम करते हैं. So these methods or those methods are known as material characterization techniques, ठीक है ना, जो जिससे ये काम करते हैं. You all have heard about some of the techniques like SEM, scanning electron microscope, tunneling electron microscope, ठीक है ना. So basically what we actually measure is topography, that means related to surface properties, surface properties, topography measure करते हैं, ठीक है ना. Then elemental composition, ठीक है ना, elemental composition measure करते हैं. In material characterization में check करते हैं, sorry, measure करते हैं, check करते हैं. And we also go through the what bulk structure and composition. Bulk structure, ठीक है, कि वो एक्चुअल में BCC है, FCC है ये, या HCP है, या कोई और दूसरा स्ट्रक्चर में है, या अमोर्फस फॉर्म में है. जरूरी नहीं है कि इन्हीं सब फॉर्म में हो, ठीक है ना. अगर क्रिस्टलाइन हुआ तो हमें मिल जाएगा ये सारे BCC FCC, इनमें से कोई एक. अगर नहीं है तो अमोर्फस होगा, ऑब्वियस सी बात है. तो उसका कैसी प्रॉपर्टीज हैं, तो ये चीजें, ये कुछ चीजें हम लोग मटेरियल कैरेक्टराइजेशन में चेक करते हैं, ठीक है ना. मटेरियल कैरेक्टराइजेशन में चेक करते हैं, ठीक है. सो related to this material characterization techniques, we have two types of material characterization techniques. One is microscopy and another one is स्पेक्ट्रोस्कोपी. और इनका काम बेसिकली, जो माइक्रोस्कोपी है वो सरफेस प्रॉपर्टीज के लिए ही इस्तेमाल होती है. माइक्रोस्कोपी टू मैप द सरफेस एंड सब सरफेस, थोड़ा सा बहुत, मतलब अगर 1 mm या 0.1 mm की थिकनेस के अंदर तक थोड़ा बहुत मेजर कर लेता है, ठीक है. बट स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो आपका ज्यादा चीजें रिवील करता है, ज्यादा चीजें रिवील करता है अबाउट द मटेरियल, इवन द योर केमिकल composition and variation and crystal structure and photoelectric properties of the material, ठीक है ना. तो स्पेक्ट्रोस्कोपी ज्यादा डिटेल में आपको आंसर्स देता है, ठीक है. And microscopy doesn't only deals with the surface properties and subsurface properties, ठीक है ना, subsurface structures, ठीक है. So एक एक करके हम लोग इन के बारे में देखते हैं. What we are going to study, what type of techniques. Basically there are 5 techniques in microscopic techniques, ठीक है ना, microscopy techniques, ठीक है ना. So one that is mentioned in your syllabus. First one is SEM, scanning electron microscope, then tunneling electron microscope, then scanning tunneling electron, transmission electron microscope, scanning tunneling microscope STM, atomic force microscope and field ion microscope. ये हम देखेंगे कि what are these, how they work and what are the components where a particular instrument is used, ठीक है ना. और ज्यादातर चीजें आपके साथ डिस्कस हो चुकी हैं यूनिट 4 में. इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया दिया गया था आप लोगों को, ठीक है. सो फोकस्ड आयन बीम और इलेक्ट्रॉन बीम, क्या नाम है, मॉडलिंग से रिलेटेड आपको याद होगा कुछ. तो वी हैव सम आइडिया अबाउट दिस, बट वी विल डिस्कस इट हियर आल्सो, ठीक है. Then there are some other techniques, related to spectroscopy techniques, and these are energy dispersive X-ray spectroscopy, XRD, X-ray diffraction technique, X-ray photoelectron spectroscopy, NMR resonance, nuclear magnetic resonance spectroscopy, electron backscattered diffraction, ठीक है, EBSD, ठीक है. So we will go 5 spectroscopy techniques and 5 microscopy techniques, ठीक है.
So before proceeding to further, I would like to have a recap or revision type का आप समझ लीजिए कि in your second year you might have gone through these. So okay, I hope the screen is visible to you all. Metallography Part 1. So actually what it is about ये आपका उसके लिए है. It is for the revision what you have done in your second year. Okay, metallography जिसमें microstructure of metals को check करने के लिए आप दो techniques use करते थे, and one is macroscopic techniques and another one is microscopic techniques. So in macroscopic techniques you do not require any instrument, just you prepare the sample and you can see some structures visible on the surface of the material with your naked eyes. Okay, so we are going to look at that Macroscopic first. techniques. Metallic materials are widely used in many areas of everyday life. How are they built up in their inside? Are there perhaps crystals to be found? And if so, how big are they? What kinds of crystals are there? What is their shape? And are there voids or inclusions? Metallography gives an answer. In this video, we would like to introduce the macroscopic techniques of metallography. Macroscopic means to investigate a workpiece over a comparatively large area. Doing this, only little or no magnification is required. Often the naked eye is sufficient to examine the material. As a first sample, we are going to investigate an ingot made from an aluminium alloy. To have a look at the inside, the material tester has to start with a raw cut through the ingot. She picks up the ingot and carries it from the laboratory to the mechanical workshop. The bandsaw machine has already been prepared. The ingot is positioned on the saw table so that the red laser marking line indicates the intended cutting plane. Clamping jaws fix the ingot securely. Then the bandsaw gently sets onto the block and cuts it slowly under intensive liquid cooling. It is important to keep the material as cool as possible to avoid changes in the material structure. That's it. The ingot has been sectioned. Back into the lab, not much is to be seen on the cross-section apart from the typical saw marks. In the next step, the material tester removes the saw marks by careful wet grinding with silicon carbide paper. On the one hand, this serves to produce a flat surface. On the other hand, the plastic deformations are removed that were generated by sawing. After the first grinding operation with coarse-grained paper, the material tester rotates the sample by 90 degrees and grinds it once more, this time with medium-grained silicon carbide paper. Here again, she uses sufficient flushing with water. This keeps the sample cool and prevents the abrasive paper from being loaded with material particles. Now, a flat, medium-ground surface has been created, but apart from the grinding marks, nothing special can be seen. Our sample reveals its structure only by the final etching process. After washing and drying the sample, the material tester dips the ground surface into a suitable etchant. In this case, the etchant consists of a mixture of different acids. Special care should be taken here. The material tester protects herself with a lab coat, special gloves, and safety glasses. After half a minute of contact time with the etchant, she washes the sample thoroughly with water and gently wipes off the grey coat of particles using cotton wool. In the
last step, she rinses the clean surface with alcohol and lets it dry under a hairdryer. Now the specimen preparation is finished. Beautiful bright and dark shimmering crystals can be seen. In technical terminology, these crystals are called grains. In the central and lower region of the sample, the grains are comparatively small. They are hardly visible with the naked eye, but in the upper part, large individual grains may clearly be distinguished. But why are the grains only visible after etching? The reason for this is that the etchant structures the material grains on the surface according to their crystal orientation. Experts call it grain contrast etching. At lateral illumination, the individually structured grains reflect the light in different directions, and the grains become visible. As a second sample, the material tester examines a piston from a petrol engine of a passenger car. The procedure is the same as before. Careful sectioning under liquid cooling is followed by wet grinding with coarse-grained paper, then wet grinding with medium-grained paper, and finally the decisive step, the etching. After washing, cleaning and drying, fantastic crystals are visible again. It should not be concealed that these crystals, these grains, are not perfect and uniformly structured crystals, but so-called primary grains. Within the primary grains, many other very small crystals and also crystal defects may be found, but these can only be seen with appropriate microscopes. Virtually all materials of our world can be examined metallographically. To show part of that variety, we will look at some additional test pieces made from different steels. All of these samples have been sectioned first. Some of them are so small that they have been mounted in resin for easier handling. And all of the samples have been wet ground with medium-grade abrasive paper. This was done towards the end of the preparation, as shown here in the case of the tooth of a gear wheel. After grinding, not much is visible except from the typical grinding marks. As before, the internal structure will only be revealed by etching. But now the material tester uses a different etchant. This time it is nitric acid diluted in ethanol. She holds the mounted sample with pliers and immerses it into the etchant. After a few seconds, she takes the sample out again, washes it thoroughly with water, then with alcohol, and finally dries it with a hairdryer. Now the preparation of the flame-hardened tooth of a gear wheel is finished. In this case, the individual grains cannot be seen. They are far too small. But what may be seen very well is the hardened zone. See, ये चीज आपको यहाँ पे समझ में आ रही होगी कि in metallography, in macroscopic techniques, we find what are the different heat treatments that has been given to the material. है ना, तो इस तरीके से हम ये भी find कर सकते हैं. This is showing a tooth of the gear that has been hardened. ठीक है ना, इसको हार्डन किया गया है, तो इसका सिर्फ टूथ वाला पार्ट जो है वो हार्डन किया गया है और बाकी जो कोर पार्ट है वो सॉफ्ट है, सॉफ्ट मतलब टफ है. ठीक है ना, तो दिस इज विजिबल. यू कैन सी द ग्रेप रीजन, that is soft region, and the hardened region zone is your tooth part, slight light gray. Okay, which appears light, and the central soft and tough region which appears dark. Next in line is the section of an induction hardened cylindrical shaft. The comparatively soft core is much more affected by the etchant than the hardened surface layer. Clearly, the induction hardened surface layer can be distinguished by its light color from the darker core. This section of a splined shaft is induction hardened as well. As a result of the etching process, the outline of the hardened surface layer may easily be recognized. The dark area represents the core that has not been hardened. This is a tooth from a case-hardened gear wheel. The surface region of the gear wheel has first been carburized at high temperature and then quenched. The etched sample shows the smooth transition from the carburized and hardened surface region to the softer interior.
Weld joints can also be examined metallographically. In our case, the etching process takes a little more time and the analysis is more difficult. But by and by, the structure inside the steel plates, the position of the weld passes, and the heat-affected zones may be identified. See, it is a welded joint, ठीक है ना? ये आपने पहले भी अगर पढ़ा होगा, तो ये आपने welded joint देखा होगा कि how the weld joints actually look, and it is similar what we have drawn the diagrams, ठीक है ना? तो main core region जो है वो इस तरीके का दिखता है, and apart from this there are some heat affected zones. So you might recognize that this diagram actually represents, you can identify using or you can visualize this using your macroscopic techniques with a skilled eye. Even in everyday life, one meets metallography. At this hot-dip galvanized lamppost, the rainwater has acted as an etchant over the years. The large flat zinc crystals have been structured on the surface and can be recognized as so-called spangle. Even inside of a tin plate steel can, crystals are visible. The fruit acid of pineapples has etched the flat crystals of the tin coating. A natural and unintentional grain contrast etching process has taken place. On the outside, the tin coating is still unchanged and shines like new. So, okay, I completed it. So Metallography, now, part earlier you have the first video you have seen is of the macroscopic techniques in metallography. Now you are going to see a video on microscopic techniques. Microscopic techniques. In this you have to see the you will find how to go the microstructures. अभी तो ये आपको naked eye से दिख रहा था, but in this you need some instrument, and mostly we use optical microscope. 2. Okay. Microscopic techniques. Metallic materials are widely used in many areas of everyday life. How are they built up internally? Are there perhaps crystals to be found? And if so, how big are they? What kinds of crystals are there? What is their shape? And are there voids or inclusions? Metallography gives an answer. In this video, we would like to introduce the microscopic techniques of metallography. Microscopic means to investigate a workpiece at higher magnification, usually with a light microscope. To have a look at the inside, the material has to be prepared properly, and this is how it is done. First of all, a small specimen has to be cut from the actual workpiece. The specimen is mounted in resin, ground in several stages, polished in several stages, and finally etched. Now the specimen is completely prepared and ready for microscopy. As a typical example, we are going to investigate a bar made from a steel used millions of times, the plain carbon steel C45E, with 0.45% of carbon. To start with, one of our material testers defines the intended sectional plane and marks it on the bar. In this case, it's a longitudinal section. Then he takes the bar to the abrasive saw to cut out a small sample. He fixes the bar securely, prepares the machine, selects the cutting parameters, and starts the first abrasive cut. Intensive water cooling and appropriate cutting parameters are important to keep the material as cool as possible. After finishing all abrasive cuts, the material tester picks up the sample and hands it over to his colleague. For further processing, the specimen has to be mounted in resin. To ensure that the resin will adhere well to the specimen surface, the specimen is placed in an ultrasonic cleaner bath for a few seconds. Alcohol and ultrasonic waves help to remove fat and loose particles from the surface. A short time under the hairdryer and the specimen is clean and dry.
To mount the specimen, small plastic molds are suitable. The material tester picks up the clean specimen and carefully places it into one of the molds. The intended plane of examination is at the bottom. Then he pours liquid resin into the mold. A thin layer of grease at the inner surface of the mold acts as a release agent. This ensures that the cured resin can later be released easily from the mold. Now the mold containing the specimen goes into the light curing unit. Under the action of intense blue light, the resin polymerizes within half an hour. The resin has cured and embedded This is the process, or this is the technique where actually what he has done here is he poured some polymer resin, okay, and to harden that polymer resin he used UV light. As we have all seen in the additive manufacturing processes कि जो liquid polymer को harden करने के लिए we used to expose it to the light or UV radiation. तो same principle यहाँ पर use हुआ है कि इस resin को harden करने के लिए हमने क्या किया, UV light का इस्तेमाल किया है. ठीक है? Specimen well. As an alternative to light curing resins, many other embedding materials are available. Each of them has its own advantages and disadvantages. Because the top surface is still uneven and slightly sticky, the material tester grinds it there until it is even. He uses a rotating water-lubricated disc equipped with coarse-grained silicon carbide paper. The circumferential surface is slightly ground as well to ensure a clean specimen. Now comes the most important part, the preparation of the intended plane of examination. Our material tester begins with comparatively coarse 180 grit abrasive paper. He makes sure to press the specimen calmly and evenly onto the abrasive paper, compensating the tendency for the sample to tilt. He also makes sure not to grind his fingertips accidentally. Now he has achieved an even, relatively rough surface. The specimen is ready for the next step with finer paper. He inserts a new 320 grit abrasive paper onto the disc. Rotating the specimen by 90 degrees leads to new grinding grooves perpendicular to the old ones. In this way, the material tester can easily check whether the old grinding grooves have been removed completely. It is important to use sufficient water flushing during grinding. This keeps the sample cool and prevents the abrasive paper from being loaded with material particles. Grinding continues with 600 grit and 1000 grit abrasive paper until an immaculate, finely ground specimen has been achieved. The specimen is now ready for polishing. An absolute prerequisite for polishing is a thoroughly clean specimen. The ultrasonic bath and running water help to remove any residue from the ground surface. Otherwise, hard particles might be pressed into the polishing cloth and scratch the surface. Hands should be washed as well so that no unwanted particles find their way to the sample and the polishing cloth. Now the material tester can start with a first polishing operation. He chooses a polishing disc equipped with hard cloth of low resilience, moistens the cloth with a suitable lubricant, and adds 2 splashes of diamond suspension of particle size 6 micrometers. Under counter-rotating motion, he presses the specimen with high pressure onto the polishing cloth. The diamond particles have settled on the cloth and are now abrading the surface. After about a minute, all grinding grooves have been removed and the specimen surface already has a shiny appearance. But still there are many fine scratches to be found, resulting from the 6 micrometer diamond abrasive. To remove them, the material tester washes the specimen and his hands again very carefully and polishes the specimen for a second time. Now he uses a softer short nap polishing pad, finer diamond suspension of 3 micrometer particle size and less pressure. After the second polishing operation, the specimen surface has an almost mirror-like appearance. No more scratches can be seen with the naked eye.
Nevertheless, the specimen has to be cleaned again and go through a third and final polishing operation. This time, 50 nanometer aluminium oxide abrasive is used. Only then is the surface prepared to a sufficient quality. At the end of the mechanical preparation, special care has to be taken to clean the specimen properly. On the one hand, all abrasive particles have to be removed. On the other hand, the freshly polished surface must not be scratched or damaged. Under running water, the material tester gently wipes the specimen with cotton wool, thoroughly rinses it with alcohol, and dries it with a hairdryer. From now on, the sample is called a metallographic specimen or microsection. Judged with a naked eye, our metallographic specimen seems to be well prepared. It is now allowed to go under the microscope for the first time, or rather onto the microscope. In fact, the design of typical metallographic microscopes is inverted. Inverted means upside down. The microscope objective is not facing downwards as usual, but upwards. This offers the advantage of simply placing the metallographic specimen on top of the microscope stage. The prepared surface faces downwards. Using the built-in digital camera, the polished specimen surface can be observed on the computer monitor. In the polished state, there isn't much to be seen in this material. Only elongated non-metallic inclusions can be observed, but if these inclusions are of special interest, then the polished state is the perfect one. Inclusions may best be seen here. However, if one wants to see the crystals, the grains and grain boundaries, then the microsection has to be etched. To do this, our material tester protects himself with a lab coat, puts on safety glasses, and pours the etchant into a small glass bowl. The etchant consists of a solution of 10% of concentrated nitric acid in alcohol. Now he turns on the water tap, picks up the freshly polished microsection with gripping tongs and immerses it for a few seconds into the etchant. Then he rinses the microsection thoroughly with water and afterwards with alcohol. The hairdryer is again used for drying. The excitement increases. Was the etching time correct? Has everything worked out fine? At low magnification, not much can be seen, which looks characteristic. The tester gradually switches over to higher magnification. In between, he focuses and adjusts the brightness. At medium magnification, light and dark areas become visible. At comparatively high magnification, in some of the dark areas, fine stripes may be recognized. The microstructure in the darker striped regions is termed pearlite. Pearlite consists of thin alternating crystals of ferrite and cementite. The white regions are ferrite crystals. They consist of almost pure iron. Great! The etching has been successful. In a similar manner, virtually all materials of our world may be examined. This is the plain carbon steel C80 with 0.8% of carbon. Only pearlitic regions with their characteristic alternating layers of ferrite and cementite can be seen. And this is the plain carbon steel S235 after a color etching. It only has a low carbon content. So, The relative amount of differently colored ferrite crystals is high, the proportion of pearlite regions low. The variety of materials is huge, and each material needs its own individual preparation. So, we have gone through macroscopic techniques and microscopic techniques. So we are seeing a trend that the grain structure, the structure we are looking at, we have gone through finer and finer details. अब इससे ज़्यादा fine detail चाहिए होगी, तो then you need some special equipment, क्योंकि optical microscope से आप microstructures तक तो देख सकते हैं, माइक्रोमीटर लेवल तक तो देख सकते हैं, ठीक है, माइक्रोमीटर्स तक तो आप जूम कर सकते हैं, बट इफ यू वांट टू गो टू द नैनो लेवल और इवन मच स्मॉलर, यू कैन से एटॉमिक लेवल तक अगर आप जाना चाहते हैं, देन यू हैव टू
use some other instruments, and here your these microscopy advanced, or you can say sophisticated microscopy techniques comes into the picture. Okay, so let's start, continue our discussion here. Okay, so देखिए अगर आप दो चीजों का कंपैरिजन करें, ठीक है, तो ये हमारा ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप का एक बेसिक स्ट्रक्चर है कि लाइट आती है एंड इट इज कंसंट्रेटेड टू दी स्पेसिमेन, ठीक है ना, स्पेसिमेन में कंसंट्रेट की जाती है एंड जब स्पेसिमेन से पे ये लाइट पड़ती है तब क्या होता है कि ये लाइट जो है डिफरेंटली क्या नाम है, रिस्पॉन्स करती है या रिएक्ट करती है, ठीक है ना, ठीक है, एंड आफ्टर पासिंग और इंटरेक्टिंग विद द specimen it is transferred to the objective lens, ठीक है, objective lens, ठीक, and then we can directly see to the it goes to the objective lens. अगर simple microscope है जो हम लोग यहाँ पर देखते हैं नॉर्मल जो स्कूल वगैरह में आपने देखा होगा, वो तो सिंपल उसमें सीधे एक कंडेंसर लेंस है एंड अनदर वन इज ऑब्जेक्टिव लेंस, बट इन सोफिस्टिकेटेड और एडवांस्ड लाइट माइक्रोस्कोप्स में आपको मल्टीपल सेट ऑफ क्या नाम है लेंसेज मिलेंगे टू हैव अ हायर मैग्निफिकेशन या रेजोल्यूशन, मैग्निफिकेशन और रेजोल्यूशन, ठीक है. So that is how your light microscope works. ठीक है ना, light microscope works. But तो यहाँ पर आपको देखने वाली चीज ये है कि यहाँ पर आपके लाइट के फोटॉन्स जो हैं वो आपके स्पेसिमेन के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं एंड बेस्ड ऑन दैट इंटरेक्शन व्हाट वी परसीव जो हमें दिखता है, ठीक है ना, अगर लाइट फॉल करती है किसी भी ऑब्जेक्ट पे एंड फॉल करने के बाद वो स्कैटर होती है एंड वही स्कैटर्ड लाइट जो है हमारी आंखों पे पड़ती है और उसी से हम एक इमेज क्रिएट करते हैं अपने ब्रेन में, ठीक है ना. सो यहाँ पर भी वही काम हो रहा है, ठीक है, लाइट स्पेसिमेन पे पड़ी, स्कैटर हुई या इंटरेक्ट किया, ठीक है ना, इंटरेक्शन बोलना ज्यादा बेटर है, एंड देन बेस्ड ऑन दैट इंटरेक्शन we captured these light rays and form the image, ठीक है ना, या उस इमेज को विजुअलाइज करते हैं, ठीक है ना, उस ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर वगैरह को विजुअलाइज करते हैं, ठीक है. अब और ज्यादा छोटे लेवल पे जाना है, देन अब हम लाइट फोटॉन्स की जगह अगर हम इलेक्ट्रॉन्स का इस्तेमाल करें, ठीक है ना, लाइट फोटॉन्स से ज्यादा छोटा कुछ है तो एक्सरेज हैं, ठीक है ना, एंड देन अदर हायर फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस हैं एंड योर इलेक्ट्रॉन्स आर मच स्मॉलर देन दी लाइट फोटॉन्स, ठीक है ना. सो व्हाट वी डू इन द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज वी डू द सेम थिंग एज इट इज, जैसे हम लाइट माइक्रोस्कोप में करते हैं. वी क्या करते हैं भाई, हम इलेक्ट्रॉन बीम के, लाइट बीम की जगह आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन बीम को इंसिडेंट कराएंगे स्पेसिमेन पे. अब यहाँ पर आपको इंटरेक्शन की बात करनी है, ठीक है ना, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बीम का स्पेसिमेन के साथ बहुत डिफरेंट तरीके, कई अलग अलग तरीकों से इंटरेक्शन होता है, ठीक है. तो जो सबसे पॉसिबल इंटरेक्शन है वो क्या है भाई, कोई बता सकता है? जो सबसे पॉसिबल इंटरेक्शन है यही कुछ चीजें हैं. एक चीज तो होगी क्या भाई, ये इलेक्ट्रॉन बीम आए और पास कर जाए, ठीक है, ठीक, इलेक्ट्रॉन बीम आए और एब्जॉर्ब कर जाए, इलेक्ट्रॉन बीम आए और क्या कर जाए, डिफ्रैक्ट कर जाए, ठीक है, डिफ्रैक्ट कर जाए, इलेक्ट्रॉन बीम आए और बैक स्कैटरिंग हो जाए, ठीक है, स्कैटरिंग हो जाए मतलब है वापस लौट जाए, ठीक है. इलेक्ट्रॉन बीम आए और क्या करे, यहाँ पर कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्ट करें, उनको एनर्जी दे और इतनी ज्यादा एनर्जी दे कि उनके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स निकलने लगे, ठीक है.
उनके ठीक है, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स ना, ये वाले इलेक्ट्रॉन इसमें जा करके इसके स्पेसिमेन के एटम्स या मॉलिक्यूल्स को एक्साइट करें और क्या करें, इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालें। ठीक है, देन इसके अलावा देर इज सम ऑगरिंग कैन टेक प्लेस, ऑगरिंग कैन टेक प्लेस, वी विल सी दिस मीन्स। ठीक है, बेसिकली ये यही है कि यहाँ का इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन है वो इसको या स्पेसिमेन के एटम को एक्साइट नहीं करता है, बट व्हाट इट डज इज कि ये इलेक्ट्रॉन जा करके एटम के इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स को ही नॉक कर देता है, इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स को ही नॉक कर देता है, और ये इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स को निकलने को, ठीक है ना, निकलते हैं, और इसकी वजह से देयर आर सम, तो इस जो इनर शेल का इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसे ऑगर इलेक्ट्रॉन कहेंगे, एंड रिलेटेड टू दिस देयर आर सम फिनोमिनन, ठीक है ना, कई सारे फिनोमिना होते हैं, उसको हम अगर ऑब्जर्व करते हैं तो उसके बेस पे हम अलग एक टाइप का माइक्रोस्कोप बनाते हैं। ठीक है, देन देयर आर चांसेस दैट दिस एक्सरे कैन बी प्रोड्यूस्ड, ठीक है ना, एक्सरे भी प्रोड्यूस हो सकता है, एंड कि इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट हो और क्या हो, इसकी वजह से एक्सरे प्रोड्यूस हो। ठीक है ना, एक्चुअली एक्सरेज ऐसी ही प्रोड्यूस की जाती है, और हो सकता है कि लो एनर्जी रेडिएशन प्रोड्यूस हो, विजिबल रेडिएशन। ठीक है ना, तो ये सब इंट्रैक्शंस होते हैं। तो बेस्ड अपॉन दीज इंट्रैक्शंस, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का स्पेसिमेंस के साथ, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन बीम का स्पेसिमेन के साथ ये जो डिफरेंट इंट्रैक्शंस हैं, इसके बेसिस पे हम अलग अलग टाइप के इलेक्ट्रॉन्स बनाते हैं, अलग अलग टाइप के इलेक्ट्रॉन्स बनाते हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप के इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स बनाते हैं, सॉरी माय बैड, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाते हैं। ठीक है ना, अगर सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर को ट्रैक कर रहे हैं, देन व्हाट यू डू इज यू मेक SEM। ठीक है, ट्रांसमिशन या जो इलेक्ट्रॉन्स जो ट्रांसमिटेड हो गए हैं उसको अगर आप देख रहे हैं तो यू आर फॉलोइंग TEM। ठीक है, TEM। ठीक, इसी तरीके से आपका देयर आर डिफरेंट, यू कैन हैव द बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे आप EBSD, अभी हमने पढ़ा था स्पेक्ट्रोस्कोपी में, तो उस पे बेस्ड हमारा स्पेक्ट्रोस्कोपी इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा। ठीक है ना, तो based on these behavior we are going to have different type of what electron microscopes and spectroscopic instruments। ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? Yes or no? Is it clear to you all? Yes sir। Is this okay? So proceeding to the next thing, ये बताइए नेक्स्ट क्लास किसकी है? नेक्स्ट क्लास किसकी है आप लोगों की? हेलो सर। नेक्स्ट, अच्छा उमर, डॉक्टर उमर की है। अच्छा ठीक है, ठीक है, तो ठीक, एक्चुअली आज मैं बस इसमें रिकैप में ज्यादा टाइम चला गया। ठीक है, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी नाउ। टिल नाउ व्हाट वी हैव स्टडीड related to microscopy or microscopic or this thing you can ask, otherwise you all are free to leave and we will start from tomorrow। हाँ, एक चीज याद रखिएगा, कल पहली 2 क्लासेस मैं कंटिन्यूअसली लूंगा। ठीक है, 2 क्लासेस कंटिन्यूअसली। ठीक है, ओके, प्लीज बी देयर, सिलेबस ज्यादा है। ठीक है, ओके, एनीथिंग you want to ask related to this today's topic, today's lecture? हेलो। Yes। सर कुछ थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि वो जो एग्जाम फॉर्म पे हमने जो किया है ना, तो उसे फिर से अनटिक करना है बोले, तो ये सही है क्या सर? नहीं, अभी मेरे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अच्छा ठीक है सर। वो बोल रहे कि बोले ग्रुप पे मैसेज आ रहा है। मैं उनको बोला कि हमारे ग्रुप पे तो कोई मैसेज आया नहीं वैसा। मैं उनको कौन बोला से कि ग्रुप मैं पे मैसेज आ रहा है भाई? सर थर्ड ईयर के ग्रुप में मैसेज आया था, बोले कि वो जो अनटिक करने को बोला था ना,
हाँ, वो भी जैसे रिजल्ट है वैसा करने का बोला है, लेकिन अभी तो ओरल प्रैक्टिकल के मार्क्स ही डिस्प्ले नहीं हुए। मैं भी सर से बात करता देखिए भाई आप लोग कुछ मत करिए ऐसा। हूँ। ओके सर, ठीक ठीक है। है, आपको अगर कोई ऐसी दिक्कत होती है, ठीक है, तो यू डायरेक्टली टॉक टू दी सीईओ, ठीक है ना, सऊद मेहदी सर, ठीक है, यू शुड टॉक टू हिम डायरेक्टली, ठीक है, क्योंकि इस तरीके से आपने किसी से सुना और उसमें पता है ये सब अफवाहें फैलती हैं, रूमर्स, यस ठीक है, एग्जैक्टली आप। और उस चक्कर में आप अपना नुकसान कर बैठेंगे। यस सर, ठीक है सर। ठीक, तो वैसे मैं एक बार सीईओ से पूछ लूंगा, लेकिन अगर ऐसा कुछ होगा तो, लेकिन आप लोग आगे भी याद रखें कि किसी स्टूडेंट के कहने पे तुरंत बिलीव ना करें, ठीक है। सर मिस, हाँ बताइए। सर इंसान के मार्क्स डिस्प्ले कीजिए ना। इनसेम के मार्क्स अभी सबके एक साथ डिस्प्ले हो जाएंगे, 8 सेमेस्टर के ना। हाँ 8 सेमेस्टर के सर। हाँ, वो हो जाएंगे, ये सब सभी सब्जेक्ट से एक साथ ही होंगे, इसकी टेंशन मत लीजिए आप लोग, ओके सर। ठीक है। प्लीज आप लोग डायरेक्टली सऊद मेहदी सर से बात कर लीजिए, और मैं भी एक बार पूछ लूंगा अगर ऐसा कुछ है तो, ठीक है। ठीक है, एनीथिंग एल्स? नो सर। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन, एंड बी रेडी फॉर टुमारो, ठीक है ना। टुमारो 2 क्लासेस लगातार होंगी, 9 से कितना 10:50 तक, ठीक है। ओके, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर।